A very good morning, class. I hope everybody is fine and enjoying the e-learning classes. Again, I'm here in your physics class today with a new chapter, that is force and laws of motion. Students, I want to tell you this is a very interesting chapter, as you are going to study the laws of the Newtons in that, which are very important from your physics point of view. In your higher classes also, you will be using these laws, and they are very easy. Just you need to pay attention to it and you will understand it all. As the name of the chapter is suggesting, force and laws of motion. In your junior classes in the 8th standard, you must have studied about the general definition of force. What was force? Whenever you are pushing or pulling something, what you are applying? You are applying force. So force of a body is defined as a push or a pull acting on a body. This push and pull acting on a body is used in our day-to-day activities also, like kicking a ball. We need to apply a force. For opening a door, we apply a force. For lifting, stretching and pressing, for everything we are utilizing what? Force. So force in general term is पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी. अब ये जरूरी नहीं है कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उस पर फोर्स नहीं अप्लाई, उस बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई हो रही है. तो वहां पर वो कौन सी फोर्स अप्लाई होती है? यू मस्ट हैव स्टडीड, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स applied at that time on the body. Now we will discuss our next topic, that is effects of force. As we know, a force cannot be seen. हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, उसका इफेक्ट बस हमें ज़रूर फील होता है, and which is produced on the bodies around us. For example, a force can move a stationary body. इसका मतलब मैं एग्जाम्पल देख के आपको समझाती हूँ. अगर एक बॉल रुकी हुई है, अगर हम उसे किक मारते हैं तो वो क्या हो जाती है? मूवमेंट में आ जाती है. सो अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. सडनली अ बॉलर जो बॉल थी उसे कैच कर लेता है, जो बैट्समैन ने हिट करी थी, तो बॉडी मोशन से किस में आ जाती है? स्टॉप हो जाती है. तो वो किससे? जब उसने फोर्स अप्लाई करी अपनी हैंड्स की टू स्टॉप द बॉल. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. सपोज आप साइकिल चला रहे हो और हल्की सी स्पीड में पेडल कर रहे हो. अब आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो आप पेडलिंग करना स्टार्ट कर देते हो ज़्यादा फोर्स लगा के. तो उससे क्या होता है? अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑल्सो. A force can change the direction of a moving body. Suppose आप साइकिल चला रहे हो, अब एक टर्न आता है, आपको क्या लेना है? वहाँ पर टर्न लेना है. तो आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे और हैंडल टर्न कर दोगे साइकिल का. तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो इससे क्या पता चला? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बलून. Here a simple example, you inflate a balloon. You fill the air in a balloon, its shape and size changes. So you are applying the force and its shape and size changes. So this shows that a force can change the shape and size of a body. Now our next topic is kinds of forces. Basically there are two types of forces classified. One is the balanced force and other is the unbalanced force. One by one, we will discuss them. The first is the balanced force. If the resultant of all the forces acting on the body is zero, the forces are called as balanced forces. अब इसका क्या मतलब होता है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. जब टग ऑफ वॉर का गेम होता है तो दोनों साइड से टीम फोर्स अप्लाई करती है. अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस दोनों साइड से अप्लाई करती है तो वो रोप क्या रहती है? बीच में स्ट्रक रहती है. ना वो इधर मूव करती है ना वो उधर मूव करती है. तो इट मीन्स एट दैट पॉइंट वी आर अप्लाइंग द बैलेंस्ड फोर्सेस. मीन्स इफ द रिजल्टेंट, अगर उस सारी फोर्सेस का मैं सम अप करूँ, इट विल कम आउट टू बी अ जीरो. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. यू पुट अ बॉक्स ऑन द टेबल. All the forces will be acting on all the four sides of the boxes. One from east direction, one from the west direction, one from the north and one from the south.
सो ऑल द रिजल्टेंट, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस लग रही है उस बॉक्स पर हर डायरेक्शन में, तो वो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, और उन सारी फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। उस टाइप की फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। Now next type of force is the unbalanced forces. Unbalanced force, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. It is just the opposite of the balanced forces. वहाँ पर सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता था, जीरो। यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सिमिलर से एग्जाम्पल लेते हैं टग ऑफ वॉर का। अगर एक टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देती है और दूसरी टीम जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कम है, तो रोप खिंचकर दूसरी साइड चली जाती है जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगती है। इससे क्या पता चलता है, द फोर्स एक्टिंग्स आर नॉट बैलेंस, मीन्स उनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो उन टाइप ऑफ फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। One more example we will see here. When we are holding a suitcase above the ground, then the force of gravity is acting on the suitcase is balanced by the upward force of our hands. Now, if we release the suitcase from our hand, then the unbalanced force of gravity acts on it and the suitcase falls on the ground. So, which type of force is applied here? Unbalanced.